Here is the summary and question bank of the first lesson from class 8th, Dhwani, a poem written by Surikant Tripathi Nirala. आइए देखते हैं कविता का सारांश. The summary of poem ध्वनि. ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रेरणादायक कविता है जिसमें कवि ने मानव को निराश न होने और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है. Dhwani is a motivational poem by Surikant Tripathi Nirala in which the poet inspires human beings not to be discouraged and asks them to keep moving ahead in their life. वे इस कविता द्वारा युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहते हैं. He wants to guide the younger generation through this poem. कवि का मानना है कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा. The poet believes that this is not the end of his life. उनके जीवन में अभी वसंत अर्थात उन्नति और खुशियों का समय आया है. The time of spring, that is the time of progress and happiness, has just arrived in his life. जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार कवि भी अपने कर्मों से अपनी ख्याति फैलाना चाहते हैं. Just as the arrival of spring spreads greenery all around, in the same way, the poet also wants to spread his fame through his good deeds. कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथों से सोई हुई कलियों को फेर कर जगाना चाहते हैं. The poet wants to awaken the sleeping buds with the stroke of his soft hands full of dreams. वह आलस्य और निराशा से भरी युवा पीढ़ी को प्रेरित करके उन्हें नए उत्साह से भर देना चाहते हैं. He wants to inspire the young generation which is filled with laziness and despair and instead wants to fill them with new energy and enthusiasm. कवि प्रत्येक कली को पुष्प बनाना चाहते हैं अर्थात हर नव युवक को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करना चाहते हैं. The poet wants to make every bud bloom into a flower. That is, he wants to make every young man aware of his duties and responsibilities. वह उन पुष्पों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं ताकि उनके सुंदर भविष्य और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके. He wants to irrigate, nourish these flowers with the nectar of his new life in order to make them bloom till eternity, so that a beautiful future and a healthy society can be built through them. कवि का मानना है कि उन्हें अभी बहुत से कार्य करने हैं. The poet believes that he still has a lot of work to do. अतः जब तक उनका यह लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, उनका अंत नहीं हो सकता. Therefore, until he fulfills or accomplishes this dream, this goal, he will not stop. Coming to the textbook questions of this lesson. First question. कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? Why does the poet believe that it is not his end yet? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके जीवन में काफी शक्ति और उत्साह है. The poet has such faith because he is young and filled with lot of enthusiasm and energy. अभी उसे बहुत से नवीन कार्य करने हैं. He still has many new things to do in his life. वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहता है तथा उन्हें उन्नति का द्वार दिखाना चाहता है. He wants to inspire the young generation, get them out of their laziness and show them the door to progress. Second question. फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? What efforts does the poet make to ensure that the flowers bloom till eternity?
फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है. In order to make the flowers grow till eternity, the poet wants to make them blossom by bringing them out of the state of buds. कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया है. The poet believes that spring has arrived in his life. वह अपने वसंत रूपी हाथ पुष्पों पर फेर कर उनसे आलस और लालसा को दूर करना चाहता है. So he wants to remove the laziness and greed from the flowers with the stroke of his spring-like hands on them. वह उन्हें चुस्त व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना चाहता है. He wants to make them agile and wishes to make them aware of their duties. Question number 3. कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? What does the poet want to do to remove the sleepiness and laziness of the flowers? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपने वसंत रूपी हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है. The poet wants to awaken the flowers by putting his spring-like hands on them to remove their sleepiness and laziness. वह अपने जीवन के श्रम रूपी अमृत से पुष्पों को सींचना चाहता है तथा उनको आभावान व पुष्पित करना चाहता है. He wants to irrigate, to nourish the flowers with the nectar of his life's hard work, to make them flower and glow. कवि अपने कर्तव्यों से विमुख युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है और उन्हें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है. The poet wants to infuse new energy and enthusiasm in the new generation, which is moving away from their duties and responsibilities. He wants to motivate them to reach their final goal. नेक्स्ट क्वेश्चन. वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए. Why is spring called ऋतुराज? Discuss. वसंत को ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा कहा जाता है. वसंत, that is spring, is called ऋतुराज, which means king of the seasons. इस ऋतु के आते ही प्रकृति में सुखद परिवर्तन आने लगता है. Spring is called so because with the arrival of this season, there is a pleasant change in the nature. पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं. New leaves start appearing on the branches. पेड़ पौधे फल फूल से लद जाते हैं. Trees and plants are loaded with fruits and flowers. कोयल कूकने लगती है. Cuckoo starts singing. और जीव जंतुओं में नई ऊर्जा और चेतना का संचार होता है. And a new energy and life is transmitted to the living beings. इस ऋतु में प्रकृति की छटा देखते ही बनती है. The beauty of nature during this season is something worth seeing. A few extra questions. कविता में किस ऋतु का उल्लेख किया गया है? Which season is mentioned in this poem? वसंत का, it's the spring. मेरे वन में मृदुल वसंत. इस पंक्ति में वन किसका प्रतीक है? What does the word one symbolize in this line? कवि के जीवन का. It symbolizes the poet's life. कवि अपने स्वप्न रूपी हाथ किन पर फेरना चाहता है? Whom does the poet want to stroke with his hands filled with dreams? निद्रित कलियों पर. He wants to stroke the sleeping buds. कलियां किसका प्रतीक हैं? What do the buds symbolize? नवयुवकों का या युवा पीढ़ी का? They symbolize the youth or the younger generation. पुष्प पुष्प से कवि क्या खींच लेना चाहता है? What does the poet want to pull out of the flowers? तंद्रालस और लालसा. He wants to make them free from their tandralas, that is laziness, and lalsa, that is greed. कवि पुष्पों को किस से सींचना चाहता है?
With what does the poet want to irrigate or nourish the flowers? अपने नव जीवन के अमृत से. He wants to nourish them with the nectar of his life's hard work. कवि किसका मार्गदर्शन करना चाहता है? To whom does the poet want to show the right path? युवा पीढ़ी का. He wants to show the right path to the young generation. कवि युवा पीढ़ी को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? What door does the poet want to lead the young generation to? अनंत का या उन्नति का द्वार. He wants to show them the door of progress, the door to eternity. So that was a summary and a few important questions and answers from the lesson Dhwani. Hope the video was helpful to you. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. See you again in the next video with a new lesson.